everyone, welcome to Ekta's Educational World. Today we will see related with the learning topic. Yes, learning is very important in terms of everything. So here it's a video on the base of learning. That what do you mean by learning? What are the things we'll learn in learning? And yes, at the end of the time there will be a short form to learn the answer. So very important. So let's start with the video now. Here the first one we'll see to it related with the learning concept. अब ये learning होता क्या है? So learning is basically the things which is important in all terms, right? हमें कोई भी चीज़ को अगर समझना है या कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ना है या तो फिर कोई चीज़ को हमें याद रखना है, इन ऑल टर्म्स लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर बेसिक चीज़ की भी बात करें या एजुकेशन टर्म में बात करें या फिर कोई और तरीके से हर एक पर्टिकुलर पार्ट में लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कोई भी चीज़ को सीखना, समझना और उस पर अप्लाई करना. सो लर्निंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट. सो हियर इट्स अ जनरल टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एजुकेशन में भी लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. द नेक्स्ट थिंग, ये जो लर्निंग कॉन्सेप्ट है ये एक बेसिकली सब्जेक्ट है बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में. येस, दैट इज़ बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो बेसिकली स्टडी होता है रिलेटेड विद टीचिंग. तो वहाँ पर आपको एक पूरा एक सब्जेक्ट मिलता है जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग. सो दैट्स वाई लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिक हम छोटे से एक स्टैंडर्ड से बात करें या फिर एक प्राइमरी एजुकेशन, स्मॉल चाइल्ड, प्ले ग्रुप, हर एक में बेसिकली टर्म्स में वेरी बिगनिंग लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ द बेसिक सिनेरियो जहाँ पर हमें लर्निंग के बारे में इम्पॉर्टेंस, लर्निंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए. लर्निंग इज़ वेरी एसेंशियल, येस, बिकॉज वॉट एवर वी आर डूइंग दैट इज़ नरिशमेंट ओनली. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर फूड से रिलेटेड हम बात करें, सो येस, दैट इज़ ऑल्सो लर्निंग. हम सीखते हैं कि किस तरीके से इसको बनाना है, किस तरीके से इसका टेस्ट आता है, राइट. लाइक वाइज ऑल्सो अदर इन्फॉर्मेशन, हम जितनी भी बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं द न्यू थिंग्स वी आर लर्निंग, राइट. वेदर इट इज़ रिलेटेड विद द एजुकेशन, वेदर इट इज़ रिलेटेड विद द फूड, वेदर इट इज़ रिलेटेड विद द बिहेवियर ऑफ समवन, वेदर इट इज़ रिलेटेड विद एनी अदर थिंग, लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज लर्निंग इज indispensable टूल. येस, जो हर एक पर्टिकुलर टाइम में लाइफ लॉन्ग चलते ही रहेगा, राइट. ऐसा नहीं हम कह सकते कि हम अभी एक छोटे बचपन है तो येस बचपन में ही हम लर्निंग कर सकते हैं, राइट. या तो एडल्ट पर्सन है वो लर्न कर सकता है. नो, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग टूल. येस, बिकॉज ये पूरा टाइम तक चलते ही रहेगा, फ्रॉम वेरी बिगनिंग टिल द एंड ऑफ लाइफ. सो लर्निंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट in everyone's life. Next we'll see to it related with the introduction. So learning is the basic term, education term है, very important. Secondly, हर एक को बेसिकली समझ में आता है, राइट. हम लाइफ में भी बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं, राइट. जो भी प्रॉब्लम्स रहती है, सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, राइट. हर एक पर्टिकुलर चीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. एवरी मोमेंट टीचेस अस समथिंग, सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग. लर्निंग किस तरीके से आता है? सिर्फ हम पढ़ते रहते हैं, दैट इज़ नॉट लर्निंग. लर्निंग ऑल्सो रिक्वायर प्रैक्टिस, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट इन एजुकेशन टर्म रिलेटेड विथ अकाउंट्स एंड मैथ सब्जेक्ट, सो इन बोथ द सब्जेक्ट एज वेल एज इन इंग्लिश डेफिनेटली रिक्वायर प्रैक्टिस. मोर एंड मोर प्रैक्टिस makes your learning better, right. Your experience will increase. So definitely learning is a complete result of practice. Next, learning is very permanent, right, because learning जो term है वो हर time चलते ही रहेगा. You can't stop learning, right, because every time you learn something in your life, in education term also and in other terms also. So it's very helpful to every human beings. Next we'll see about the meaning. So learning is actually a link between cause and result, right. हम पहले सबसे पहले देखेंगे कि इसका कारण क्या है, वजह क्या है, राइट. क्यों ये चीज़ हो रही है और उसके रिलेटेड उसका रिजल्ट. अगर हमें पता चल गया कि क्या रीज़न है, कॉज दैट मीन्स रीज़न, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. ओके, अगर रीज़न पता चल गया कि हाँ क्योंकि स्टडी प्रॉपर नहीं किया था,
learning is not proper, so definitely that is the link that yes, learning is a part of it, right? तो रिजल्ट पता है, कॉज पता है, बट इसको कनेक्ट कौन करेगा? दैट इज लर्निंग. सो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल. सेकेंडली, लर्निंग इज कंटेंट वॉट इट इज़ रिलेटेड विथ नॉलेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जितना लर्निंग करेंगे डेफिनेटली योर नॉलेज, राइट, your thinking power, your skills improvement will be available, right? और ज़्यादा better हो जाएगा, and you will be expertise in your particular subject, in your particular career, in your particular terms, so that all things are important. So learning को best बनाने के लिए और better बनाने के लिए these three terms are important. First is knowledge, second is skills, so this will be improve your experience. And the next one that is related with, ये सबके लिए applicable है. It is applicable for humans, for animals, right? Other well-being, सबके लिए learning is important. ऐसा नहीं सिर्फ इंसान ही सीखता है, right? Animals are also learning what to do, right? How to do it, right? Next time if they are doing, so what will be the changes required? So these all are the common basic terms which apply by everyone. Next we'll see to it the definition of learning. So here I have concluded the definitions in two particular basic authors. First will be E.H. Sanford and the second one will be L. Magee. राइट, दोनों ही टर्म्स में हम देखेंगे तो मीनिंग हमारा जो मतलब निकलता है लर्निंग का, दैट इज सेम, बट द एक्सप्लेनेशन इज लिटिल डिफरेंट. अकॉर्डिंग टू E.H. Sanford, learning is relatively enduring change brought about as a consequence of experience. इन सिंपल टर्म्स, लर्निंग बार 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 हर बार चेंज होता रहता है, राइट? इफ़ विल गो फ्रॉम योर होम टू योर वर्क प्लेस, right? Definitely your experience of every day that will be change, right? कुछ ना कुछ नया नया आप देखोगे. पहली बार अगर आप जा रहे हैं, so you will find a new way. Second day you are going, so you will see the nearby what are the things is there, right? Third day you will go, so you will experience, yes, here is a school, here is a particular class is there. Fourth day you will go, so you will experience different shops is there, different route available to go to work. So these all are the change, that is only learning, and that will give you an experience. Next one, according to L. Magee, learning has taken place if an individual behaves, reacts and responds. These three very important things. Behaves, definitely how we are behaving, right? That is also a terms of learning. Suppose every time we are behaving in angry mood, rudely, right, we are not talking properly, so that is our behavior. So that behavior will change, but change in this swings only, right? यही behavior हमारा रहेगा. बार बार हम बहुत गुस्सा हो रहे हैं या तो rude हो रहे हैं, that is our behavior. Sometimes we have to calm also. This is the changing behavior. As per our behavior, our reactions will come. डेफिनेटली अगर हम बहुत ज़्यादा अभी गुस्से में हैं तो डेफिनेटली हमारा रिएक्शन भी वैसे ही होगा. विल टॉक विद अनदर पर्सन वेरी रूडली, राइट, वेरी लाउडली, not properly will talk. So this is what are reactions, and definitely after this reactions will get same response from the other person, right? So these three things are very important, and that we'll learn after learning. Learning will teach us how to behave, right, how to react, and definitely what response we'll get according to our behavior and reactions. So as a result of experience in manner different from the way he formerly behaved. As per behavior, reactions will come out and response will get. So definitely learning teach us how to behave, how to react, and how to respond. Next we'll see to it after definition, kinds, right? Learning में kinds बहुत ज़्यादा important है. To understand the person, right? To understand the ability of the person, kinds is very important. What are the learning ability that person has? So that we'll see from the different types. So here are the different types. First one, conceptual learning. Now conceptual learning is also known as abstract learning, जहाँ पर हम बहुत डिटेल में बेसिकली स्टडी करते हैं. दैट इज़ वॉट रिलेटेड विद द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग. हर एक पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज होना, उसको अंडरस्टैंड करना, डिटेल नोट्स बनाना, राइट, प्रॉपरली स्टडी करना, दैट ऑल विल बी रिलेटेड विद द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग.
आइडियाज़ वगैरह कॉन्सेप्ट समझना इन डिटेल स्टडी, दैट इज़ मीन्स कॉन्सेप्चुअल लर्निंग. सेकेंड इज़ कॉग्निटिव लर्निंग. कॉग्निटिव लर्निंग बेसिकली स्कूल्स कॉलेजेस में हम प्रेफर करते हैं, जहाँ पर टीचर्स हमें एक्सप्लेन करते हैं पर्टिकुलर चीज़ का, कोई भी एक सेंटेंस है या तो कोई भी वर्ड्स है उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, राइट. जैसे एक्सप्लेन करते हैं, हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में बताते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं. दिस ऑल विल बी कॉग्निटिव लर्निंग, राइट. कॉग्निटिव लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन टर्म. थर्ड वन विल बी एसोसिएटिव लर्निंग. एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब होता है इट्स अ लिंकिंग. हर एक पर्टिकुलर चीज़ का कनेक्शन बनाते हुए हमें आगे लर्न करना है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ग्रुप स्टडी वगैरह करनी है, या तो बेसिकली बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम सर्च करके फिर उसको समझते हैं, राइट. सो दिस ऑल आर द एसोसिएटिव लर्निंग. इट्स वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड देन वी हैव टू मेक इन अ सीक्वेंस, राइट. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कोई भी सब्जेक्ट है, राइट, जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, सो व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू लर्न फर्स्ट. तो फर्स्ट हमने सिलेक्ट किया दैट येस विल स्टार्ट विद द नाउन फर्स्ट, देन विल सी द टाइप्स ऑफ नाउन, देन विल सी द प्रोनाउन, राइट. ये हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की और फिर उसको सीक्वेंस में सेट करके हम उसको लर्न करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. सो दैट विल बी द एसोसिएटिव लर्निंग, राइट. नेक्स्ट विल सी टू इट द फोर्थ वन, दैट इज रिलेटेड विथ perceptual learning. Now perceptual learning is related with form of senses, right. हम किस तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, राइट, फ्रॉम राइटिंग वी आर अंडरस्टैंडिंग, वी आर लर्निंग, जैसे स्कूल कॉलेजेस में होता, वॉट एवर टेक्स्ट बुक digest reliable is available, that we are learning, so that will be related with the written objects. Same with the spoken one, अगर टीचर्स ने या प्रोफेसर ने कुछ एक्सप्लेन किया है and that we are understanding thoroughly at that time only, that is with the spoken object. तो ये सेंसेस है जो हमें रिकॉग्नाइज करवाते हैं, राइट, जिस तरीके से हम चीज़ों को ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सेम अदर्स ऑल्सो, कुछ बच्चों को जस्ट रीडिंग से समझ में आ जाता है, सो रीडिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हम कई बार ऑब्जेक्ट विजुअलाइजेशन से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल कहीं पर बाहर गए हैं, राइट, फ्रॉम हियर टू लोनावला, सो डेफिनेटली द रूट विच वी आर जस्ट क्रॉसिंग और डिफरेंट सिनेरियो वी आर सेइंग अराउंड अस, सो दैट विल बी ऑल्सो अ लर्निंग पार्ट. ये हमें जल्दी याद रहता है. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एबिलिटी एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग इज देयर. Okay, so perceptual learning is very important. It's based on senses. Next will be dynamic learning. Now dynamic learning, here it's very important because it requires control on body and emotions, right. हम किस तरीके से हमारे सारे emotions को control कर सकते हैं, that is also part of learning, right. For example अगर पेरेंट्स कुछ अच्छे के लिए हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट, बट दैट टाइम वी आर नॉट इन अ मूड टू अंडरस्टैंड, right, but still we are keeping ourselves calm, right, and just keep quiet, so that will be we are controlling our emotions, right. So that is what we have to control our emotions, our body, that is the dynamic learning, very important. Next will be emotional learning, right. Emotional learning, here it's conclude related with what are the things we like to do. For example some like to do swimming, so that is their emotional learning, right. उससे वो जल्दी सीख जाते हैं, they like it, right. So whenever they will try to understand the things, तो वो चीज़ों पर अगर हम example ले या वो चीज़ों के बारे में बात करें, so they will understand better and fast, like cycling, typing, sometimes reading, hanging out. This all are the emotional learning which we like to do, right. तो ये सारे जो हमने 6 points देखे हैं, this all are related with the kinds or types of learning. It is important and understandable and connected with everyone, right. Whether it's a small child, adult person or old person, सबके लिए learning बहुत ज़्यादा important है, right. In education term it is very important. अब इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म देखते हैं. व्हाट इज़ द शॉर्ट फॉर्म टू अंडरस्टैंड द आंसर. तो इसका शॉर्ट फॉर्म है कैप दे, राइट, कैप देना है, इस तरीके से इसका शॉर्ट फॉर्म है. सो हियर आई हैव कंक्लूडेड इन शॉर्ट, C is there, that's why C2. So that is one is conceptual and another one is cognitive.
A, which is related with the associative, P, perceptual, D, dynamic, and E, emotional. In short, we'll quickly revise it. C से conceptual, जितना भी basic चीज़ें हैं डिटेल में स्टडी करना. Cognitive, right, with the help of others, right, with the help of the things we are learning, that is important. Associative, right, कोई person का help लेके या तो lots of information we are collecting and doing. Perceptual, जो भी बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है राइट उसके बेसिस पे हमें उसको लर्न करना है. डायनामिक, with the help of body and emotions we are controlling, that is dynamic. And last one will be emotional, right, well whatever we are liking and that we are doing, that will be our emotional learning, right. In short, we have concluded here, but the detailed video is available, you all can just revise it, right. So here it's a video we have concluded here. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच एवरीवन.